Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, our project of Iqra Education System. This video session is for English text for class 8 and this is lecture number 20. My dear students, yesterday we read the poem and I hope you must have enjoyed it. And today we will do some book exercises of unit 2. So kindly take out your English textbook and open page number 22. Okay, on page number 22 we have exercise 1 and exercise 2. And exercise 1 is read the poem and decide which stanza each of these picture matches. Write the stanza number under the space provided in each box. बेटा जो पोएम हमने पढ़ी है My blessed beautiful land, it has 4 stanzas. और हर स्टैंजा में किसी न किसी खास जगह के बारे में बताया है. Like in the first stanza we read about mountains. And in the second we read about Aran desert, precious stones and minerals. And in the third stanza we read about fertile plains, mighty rivers. And the last one we discussed about Indus Delta, Mohenjo-daro. ओके जैसे पहले स्टैंजा में पहाड़ों के बारे में, दूसरे में सहरा के बारे में, मादनियात के बारे में, कीमती पत्थर के बारे में बताया. तीसरे स्टैंजा के अंदर ज़रख़ेज़ ज़मीन के बारे में, फसलों के बारे में, दरियाओं के बारे में डिस्कस किया है. और चौथे स्टैंजा लास्ट स्टैंजा के अंदर इंडस डेल्टा, दरिया सिंध और मोहेंजो-दड़ो के बारे में बताया. तो आपने ये करना है कि ये देखना है कि कौन सी पिक्चर किस स्टैंजा से मैच करती है और उसके बाद आपने उसका स्टैंजा नंबर यहाँ लिखना है इन बॉक्सेस में. ऑलराइट, और आई नो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बिकॉज इट इज़ वेरी इजी. ठीक है, तो आप कर लेंगे ना इंशाल्लाह इसको. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 2 वोकैबुलरी. एक्सरसाइज इज the meaning of some words are given in the following tables. Read each stanza one by one and find the words that have the given meaning. Write the word that matches the meaning in the word column. बेटा इसमें ये बताया है कि जो वर्ड्स, जो पोम हमने पढ़ी है उसके हर स्टैंजा में कुछ न्यू वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स की मीनिंग्स गिवन टेबल में दी हुई. वी हैव टू फाइंड द वर्ड्स एंड राइट द वर्ड दैट मैचेस इन द मीनिंग. ओके, नाउ लेट्स सी स्टैंजा 1 फॉर द वर्ड्स. इन स्टैंजा 1 वी हैव spellbinding, mighty, astound, snow-crowned, and sound. And the meaning of these 5 words have been given in the table of stanza 1. And we have to write these words there. The first one is holding one's attention completely. And it is the meaning of the word spellbinding, मुतवज्जा कर लेना. The second meaning is surprise a lot, and the word is astound, हैरत में डालना. The next is very high, mighty, कवि, बहुत बड़ा, ऊंचा. Peaks covered with snow, snow covered, बर्फ से ढका हुआ. और in good condition, अच्छी हालत में,
और इसका वर्ड है साउंड। अब स्टैंजा 2 के वर्ड्स देखते हैं। ब्राउन, lofty, precious, fearless, and abound. Stanza 2. Turn brown in color. It is the meaning of the word brown, khaki rang. Very high, lofty, बहुत बुलंद. Valuable, precious. Valuable is the meaning of precious. कीमती, brave, fearless, बेखौफ, बहादुर. Found in large numbers. Abound, बकसरत होना, ज़्यादा होना. Okay? Now let's see stanza 3. And the words of stanza 3 are fertile, plains, renowned, tales, legends, profound. And meanings and their words are: number 1, soil or land in which crops grow well. This is the meaning of the word fertile. Zarkhez, a large area of flat land. Plains, saaf मैदान. Famous is the meaning of the word renowned. मारूफ, मशहूर. Exciting stories. It is the meaning of the word legends. Qissa, old stories that may or may not be true. Tales, यानी अफसाना, अफसाने. Having a great effect. It is the meaning of the word profound, गहरा. और 4th स्टैंजा के वर्ड्स हैं डेल्टा, माउंड, echoes, ancient, resound, resourceful. Now look for their meanings in the table. The first one is the mouth of a river where it spreads out before entering the sea. It is the meaning of the word delta. दरिया को बांटने की जगह. The second, a small hill. A small hill is the meaning of mound. छोटी पहाड़ी. Very old, ancient, कदीम, बहुत पुराना. Repeated sounds, echoes, गूंजना, गूंज. Loud, deep sound, resound, गूंजना, शोर मचाना. Someone who is good at finding new ways to do things. Resourceful, ज़राए रखने वाला. I hope you have understood well and will do this exercise in your books. Okay? Let's do exercise 3. Exercise 3 is question answers, and you have to do this exercise in your notebook. Number 1,
Which of the two mountain ranges are mentioned in stanza 1? Karakoram and Hindu Kush are mentioned in stanza 1. Question 2. Name the desert mentioned in the poem. सहरा का नाम बताएं जो पोम में यूज हुआ है. Haran desert is mentioned in the poem. Number 3. Which ancient site is mentioned in the poem? किस कदीम जगह का नाम पोम में मेंशन किया गया है? Mohenjo-daro is mentioned in the poem. These are very simple, very easy question answers. The fourth one is, how many qualities of the people of Pakistan are mentioned in the poem? List them. पाकिस्तान के लोगों की कितनी क्वालिटीज़ पोम में बताई गई हैं और उनकी एक लिस्ट बनाएं. There are 6 qualities of the people of Pakistan are mentioned in the poem. They are as follows. Number 1, warm, brave, fearless, simple, sincere, resourceful. Fifth one is, which prayer is repeated in each stanza? The prayer, O my Lord, keep them all safe and sound, is repeated in each stanza. Okay? Now take out your diaries for homework. Homework is, do exercise 2 vocabulary in the book and do exercise 3 on page number 24 in the notebook. Okay? बेटा ये जो वोकेबुलरी की एक्सरसाइज है जो स्टेंजा वाइज दी हुई है ये आपने बुक में करनी है और जो एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 24 पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने नोटबुक में करना है. ओके? अस्सलाम वालेकुम.